क्या होता है, क्यों होता है, कोई पाता है, कोई खोता है। मैंने ये भी सुना है that broken heart story. There is a story. There is story. For every person, there is a story. Yes. Would you like to share the broken heart story or no? I would say that we should skip that part. I can tell you that personally. नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है और जैसा कि मैंने आपसे हमेशा प्रॉमिस किया था कि हमारे जो जीवन में हमारे आसपास जो लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं बिटवीन द कॉमन पीपल, हम उनको बुलाएंगे, उनसे हम बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप भी वैसे कर सकते हैं जैसा उन्होंने करके दिखाया हुआ है। हमारे आज के गेस्ट जो हैं वो हैं डॉक्टर गौरव यादव। ये याद रखिएगा, गौरव यादव हैं ये। इनको भी बहुत अच्छा खासा मुआवजा मिला हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये घर बैठ गए स्कॉर्पियो ले घूमने लग गए। इन्होंने डॉक्टरी पढ़ी एंड ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। ही इज़ वर्किंग विद द कैलाश हॉस्पिटल न्यूरो सेंटर विच इज़ वेरी क्लोज बाय फ्रॉम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस हिम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, तो प्लीज टेल मी अबाउट कि आप वो उसके बारे में बताइए कि भाई जब मैं बड़ा हो रहा था यहाँ सब खेत थे, हाँ, जिनमें बिल्डिंगें बन सब खेत थे, उसके बारे में बताइए जरा। That is my most favorite topic actually. अच्छा, प्लीज। Like I was in school time. Since like childhood I was in hostels. So our parents they were like so concerned like यहाँ पे सब कुछ नहीं है अभी, ठीक है, and everybody is getting just money. यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं है यहाँ पे, हाँ, यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं है, कल्चर नहीं है, पढ़ाई लिखाई का, because everybody is getting money and they are buying stuff like building new homes, buying new cars and roaming around. So by that time we used to be just go around and just we had these fields and like we were just farmers long back. So we used to go to the fields. We used to carry foods for our parents who used to stay in the so in the past you were saying that where all these societies are made there used to be farms and you used to carry food for your father कि वो खेती करते रहते थे उस टाइम, because they were like either वो वहाँ पे ट्रैक्टर चला रहे होते थे, अच्छा जी, या फिर वहाँ पे ऐसे कैसा लगता होगा ना उस टाइम नोएडा, ग्रेटर नोएडा उस टाइम पे ऐसा लगता ही नहीं था, फ्री होगा ना, बहुत फ्री था, इतना लाइक चिल। उस टाइम पे इतनी भाग दौड़ नहीं थी, इतना सब कुछ पॉल्यूटेड, इतना कुछ नहीं था। लाइक आई रिमेम्बर कि टिल सेक्टर 34 इट वाज लाइक नोएडा, आफ्टर दैट देयर वाज नथिंग। अच्छा, इट वाज एम्प्टी। सेक्टर 34 जो यहाँ पे है, उसके आगे कुछ नहीं था, उसके आगे थोड़ा बहुत था बस, फिर खेती थे। तो उस टाइम पे फिर एकदम से चीजें आई थिंक 2005 के बाद बहुत ज्यादा स्पीड से डेवलप होने स्टार्ट हुई। कभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, कभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग वाज। तो उसके बाद हम देखते थे ऐसे कि यहाँ पे ये बनेगा, हम देखेंगे क्या होगा, ऐसा। तो उस टाइम पे बहुत एक्साइटिंग लगता था, क्यूरियोसिटी होती थी, बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि लाइक क्या बनेगा यहाँ पे अभी। मतलब वो ऐसा था जो हमने पहले प्लेन एरिया देखा है, जहाँ पे हमने खेत देखे, वहाँ पे उन्होंने पूरा ऐसे खोद दिया है, बहुत गहरे गड्ढे, ऐसा लगता था कि क्या ही बनेगा पता नहीं, ऐसा। तो हम उसको बस ऐसे देखते थे। फिर वहाँ पे काफी बड़ी जब हमने लाइफ में पहली बार देखा कि काफी बड़ी ऐसे जेसीबी टाइप की मशीनें थी जो मतलब ड्रिल करती थी, ड्रिलर्स से काफी बड़े। तो लोग आते थे, हम फिर देखते थे कि यार ऐसा पता नहीं क्या ही होगा यहाँ पे, इतना सब कुछ हो रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे चीजें बढ़ी, फिर हमें लगा अच्छा यहाँ पे और लोग आके रहने वाले हैं, अपार्टमेंट्स बनेंगे। कितने साल के थे आप उस टाइम पे? लाइक 8 years। अच्छा, एक और बात बताइए, लेट्स टॉक देयर आर 2-3 एंगल्स टू इट। एक होता है कल्चरल है, उसमें भी बहुत इन्वेजन हुआ, आपके कल्चर में भी इन्वेजन हुआ इस लोगों के आने से। फिर फाइनेंशियल है, उसमें आप लोगों को बहुत फायदा हुआ। फिर फिलोसॉफिकल है, एक जो साधारण गांव का बंदा था उसको बहुत सारी कीमत पहुंचा के उसकी गांव की जिंदगी छीन ली गई। ऐसे मानते हैं आप इस बात को? हाँ, अगर मतलब लोगों की चॉइस हो कि हाँ मुझे अभी ये काम नहीं करना है, ठीक है, देन इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स गुड। बट लोगों को चॉइस ही नहीं दी, चॉइस नहीं दी गई, क्योंकि और एकदम से मतलब लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, एकदम से उनकी जिंदगी इतनी बदलाव आ जाएगी। इसी के चलते अभी भी आप अगर इफ यू सी
then people are far behind. Like they are still on that phase. Like still they think they are farmers, but there is no field where they will go. They don't know what they have to do next. So that's why I think this is also a part. Like they don't study, they don't think about it. Like ये जो they don't study पे आते हैं कि see what happened was suddenly a young boy like you who's 8 years of age जिसने liquid cash नहीं देखा अभी तक, खेती कर रहा है, माँ बाप भी खेती कर रहे हैं, फाइनेंशियली वेल टू डू हूं मैं, पर मैंने पागलपन वाला कैश नहीं देखा, और सडनली वो बहुत सारा पागलपन वाला कैश आ गया हमारे पास. then ऐसा लगता है like do it now, everything is in your hand, इजीली खरीदा जा सकता easy है. to get. And like when the cash comes to you, like you didn't do anything for that. It's like it came by itself. And it's like your old generation people, they worked hard, they made all the fields and all that, and you just got the cash. Then you don't know what to do with it. Like either utilize it or either just have everything, like just enjoy with that money. So like I think most of the people, they just enjoy with that. Only some people, they utilize it and they are doing good with that. But mostly people, they just lost it. They lost their minds. So they just bought so many और things. कुछ लोग तो वो भी है ना आपके यहाँ पे जिन्होंने बहुत सारे पैसे पाए और वो खत्म करके बैठ भी गए 3-4 साल में. तो आई एम टेलिंग ना that उन्होंने बहुत सारे पैसे है, कब I don't know, their mind stopped working. Then उनको लगा कि अब तो पैसा है हमारे पास, ये तो खत्म नहीं पर होने अगर वाला. भारत सरकार पे मैं आरोप लगाना चाहूंगा अपने इस शो के द्वारा कि भाई आपने इतने पैसे दे दिए लोगों को कि उनकी जो बेसिक लाइफ चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी, आपने उसको इंटरप्ट कर दिया बुरी तरह उसको से. इंटरप्ट कर दिया और फिर उनको एक कोई मोटिव नहीं दिया कि भाई पैसे दिए किसी को, ठीक है, बट पैसे हमेशा थोड़ी ना रहेंगे. आगे के लिए कुछ काम दो, आगे के लिए कुछ जॉब्स वगैरह दो, कुछ ऐसा कुछ करो. बट वो सब नहीं किया, सिर्फ बोला कि जमीन है हम लेंगे, तुम पैसा रखो, ठीक है. लेकिन और ऑप्शन भी नहीं दिया कि मतलब मेरा मन नहीं है बेचने का, वो दैट्स नॉट एन ऑप्शन. वो ऑप्शन भी नहीं दिया. उन्होंने बोला इट्स लाइक गवर्नमेंट नोटिस है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो करना ही पड़ेगा. तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम अपनी जमीन नहीं देना चाहते, तुम खेती ही करना चाहते हो तो खेती करो. या फिर और ऐसा ऑप्शन दे सकते थे कि अगर तुम्हें खेती ही करनी है तो कहीं और जमीन ले लो, जितनी तुम्हारी यहाँ पे उतनी ही जमीन कहीं और ले लो. बट वो फिर एक इशू हो जाता है कि कोई भी अपना घर छोड़ के कहीं और क्यों छोड़ेगा कोई. एक और भी चीज है इसमें बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है जो हिंदू कम्युनिटी है वो भारत सरकार के निर्णयों के समर्थन में अधिकतर रहती है. अधिकतर अगर भारत सरकार ने बोल दिया कि ये कर लो, या जैसे आपके घर के बगल से सड़क जाने वाली है, ठीक है, आप वो बंदे नहीं हो जो बोलोगे मेरे को सड़क नहीं चाहिए भाई, मेरे को तो यहाँ पे अपना गांव ही चाहिए. Most of the time, the Hindu community supports what the government does. Most of the time. As some people, I think all communities should accept this. Like, if government is trying to do something good to you, then what else you want? Like, government is trying to provide you road. Government is trying to provide you education. Then you should accept it. If things are good, just accept it. And if there is issue, like I don't think that. Somebody will have issue with government will say that we are going to build a road here nearby your home or nearby your land. So I don't think people will have issue with it. But some people they don't. एक बेसिक जनगणना नहीं हो पा रही, पता है हमारे देश में. हाँ, नहीं हो पा रही. लोग प्रॉब्लम है उससे. लोगों को प्रॉब्लम बहुत सारी चीजों से. हाँ. अगर मैं बोलूं कि लाइक मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, उससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है. तो बोलेंगे क्या ही कर रहे हैं. चलिए फिर आते हैं इस पे कि जो योर फादर डिसाइडेड कि मुझे अपने बेटों को इन चक्करों में डालना ही नहीं है, कि इसका दिमाग खराब होने से पहले मुझे यहाँ से इसको कहीं भेजना है, उसके बारे में बताइए. फिर आपने और सक्सेसफुल हो गए, आप डॉक्टर बन गए, उसके बारे में बताइए. दिस वाज एक्चुअली टोटली माय फादर डिसीजन. लाइक यहाँ पे सभी को पैसा मिल रहा है, सभी लोग स्कॉर्पियो वगैरह खरीद रहे हैं, स्कॉर्पियो सफारी ये सब खरीद रहे हैं, और एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, किसी का वो है ही नहीं. तो माय फादर डिसाइडेड कि लाइक इनको ये सब चीज से दूर ही रखना है. So they sent us to hostel. Since then, we used to come like in holidays only. We didn't stay in Noida at all. So it was his decision, and I think it was good. That's why I'm here, and I just grew up so much. And one thing was that I never wanted to be a doctor or something like that.
I just wanted to be an painter. I used to paint things. अरे वाह, I used to do you still do it, right? I don't get that time now. Okay. But sometimes I do the sketching Okay. or pen art. But I used to do that. I thought that I'll do good in that. But maybe I don't know. But you will do in future. I'm sure that once you are satisfied with whatever you have. But जितना पैसा है तुम लोगों के पास अभी भी satisfied हो सकते हो, ऐसा नहीं. Nobody is satisfied with money actually. Okay, how was your college? कौन से college से आपने MBBS किया है? I did my college in Bareilly. There is college named Rasri. I studied there, and it was like when I went to the college, there was nothing. हाँ. It was so new, and our batch was the first batch. We अच्छा. started from the college, like we were the first students अच्छा. there. अच्छा. So we were like 150 students 150 there. students. So everything was so new for us. Like there was no seniors, nobody to tell us what to do next, how to study, and how to manage other things. But our faculty, they really helped us so much with all things. Like they knew that they are like just after school they came here. They don't have any seniors. There's no environment like the medical college, So they gave us the things. Like they became our seniors. They helped with everything. The faculties. Yeah, Obviously, the yes. faculties, obviously. Because somehow it's their job also. But next batch के लिए आप लोग ready हो गए होगे. Yeah, but that is not like faculties don't do that usually. Like if अच्छा. you go to an old medical college, they don't help that much. They just tell you to go to the seniors and ask them. So for us, they were like guardians and seniors. Okay. Because in medical college, it's like a trend. Like they don't call senior or sir like that. They call you like boss or something like that. They make a relation. Like everybody, if somebody is junior, still if somebody will come from my college and he'll see me and then he will call me with respect. Then it's from inside. Yeah, he's my junior. Then I should help him to grow. If he don't know things, then ask him. I will help them only. Because that's what our senior also do. Like our faculty. Once I went to this medical college NIU, and this I think you have seen it now on this Yamuna Expressway. Yeah. So I went there and I met one HOD from anatomy. There I just went to teach. Like I appointed as a tutor. Okay. So I went there and then the HOD was there, and she asked me like, where did you study? And then I said, ma'am, I studied there. Then she was like, oh, so you are Sanjay sir student. There was my back in time, like when I was in first year, there was sir, his name was Sanjay. So he was like so good, so humble. So she knew him. And then I said, yeah, ma'am. Then I was like, okay, ma'am, I know him. He knows me well. And then she was like, okay, let's talk to him. Then she immediately called him. And we started talking. Then sir was like, okay, don't be panic. I know this is your first time you are going to teach some people. So it was like 200 people in that batch. So I had to teach that 200 students. And by that time, literally, I never had the idea that how much teachers struggles. Like I felt that like it is a hard job to do, to teach students, because they do like we also used to do in college back in time. They take banga sometimes. If you're young, then baapre. Yeah, it was like and you know the things exactly because you just came from the college, so you know what students do and how they try to be naughty and all this. So you know that. So I noticed it and I was like, I am going to teach people really like I used to be the one who used to do naughty things in college time, and I am going to tell them how to behave in classes now. That was so funny. But if you once you're able to make that bond with them and they know you're equally harami, yeah, then they are friends. ये भी बढ़िया है, चल कोई बात नहीं. But like if it's a bunch of group, like 200 people are too much. So only some people is going to understand like that. They know that they are equally harami. They know we are on a same level. But some people are like, no, we are upper level. So we don't want to. नहीं होते हैं हर हरामी के ऊपर एक हरामी. I went to Nirma University to speak to them in regards to their careers. There was some annual function or something. So some kids were like that. ठीक है. So I had to tell them कि कि साले ऐसा अभी मेरे से ऊपर नहीं गया है. ठीक है. Actually बच्चों को हमेशा लगता है कि वो अपने बाप के ऊपर है. आपको हमेशा पता होता है. अच्छा, there is a movie called as Munna Bhai MBBS. Yeah. Let's watch that scene and I want to know your reaction.
I know everybody has seen that scene several thousand times, but I want to see that scene and then I want to know डॉक्टर साहब का reaction क्या है. भाई तुमको हॉस्टल में रहने की क्या जरूरत है? ये सब के बारे में मत ये ना. Seriously. भाई ये रूम How accurate is the description in Mono MBS? कितना accurate लगा? This scene or the next scene? Every scene. Like Mono MBS कितनी accurate लगी medical college के लिए आपको? The fun part, हाँ. it is like made up only. अच्छा. But when you go to the hostel, when you go to the like, there is a scene of dissection, na, हाँ. where they cut the हाँ, bodies. हाँ, and हाँ. It is like exact. अच्छा. Like there are people around the body, हाँ, हाँ. and the body. If we talk about funny thing, Hmm. the body, if they have brain, if they can think, na, they'll be like, I am laying down naked here. They are cutting all part of me. What the fuck is this? हाँ, 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 हाँ. Instead of that, they should have buried me, na. हाँ. अच्छा एक और भी चीज है जो इनको क्या कैडावर बोलते हैं ना. Cadaver. कैडावर्स. ओके. तो इस तरह से क्या था कि एक वन ऑफ माय आई वुड नॉट कॉल हिम अ फ्रेंड बट समबडी आई नो. तो उसमें है कौन सा लखनऊ में कौन सा मेडिकल कॉलेज सरकारी जो है KGMC. KGMC. तो ही वाज लाइक इन CPMT में उसके उसमें CPMT होता था. ही हैड अराउंड ही वाज लाइक 110 रैंक इन यूपी. तो उसको मिल गया वहाँ पे. काफ़ी अच्छा कॉलेज है वो. तो वो बताता था कि देयर इज दिस लेडी, ठीक है, हु हैड सम इश्यूज विद हर वजाइना. तो उस लेडी को इनको लेके गए. जिंदा है वो लेडी, ऐसा नहीं है डेड है, बट उसका जो इश्यू था वो यूनिक प्रॉब्लम थी. उसके वजाइना में जो इशू था क्या होता था, इफ यू पुट एनीथिंग इनसाइड हर शी विल स्टार्ट ब्लीडिंग. ठीक है, ये प्रॉब्लम थी उसको. तो ऑब्वियसली उसके हस्बैंड ने बोला कि व्हेनेवर आई हैव सेक्स विद हर शी स्टार्ट्स ब्लीडिंग. तो इस बार क्या हुआ, दे वर पुटिंग फिंगर जस्ट टू शो देम कि ये देखो कैसे ब्लीडिंग होती है. एंड ही वाज डिस्क्राइबिंग मी कि उस लेडी ने ना अपना मुंह ऐसे बांध रखा था, ऐसे 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 करके. कवर नहीं होगा तो ऐसे कवर करना. उसने अपना मुंह फेस बांध रखा, तो नाक खाली खुली थी, पूरा फेस बंधा हुआ था उसका. तो मैं ये जानना चाहता हूँ बिकॉज यू गाइज आर डीलिंग विद द ह्यूमन बॉडीज लिविंग एंड डेड. कैसा एक्सपीरियंस रहता है? Like if you are dealing with the dead, it is like you can do anything. But if you are dealing with the live one, You can it make is- him dead and then deal with him, right? but that's not our job. Our job is just to keep them alive. You know. But you know, like if patient they are logical. If they don't do Google, na, then it is better to deal with them. Yeah, because if they do Google, na, if you search about it on Google about a pimple, then Google will tell you so many things, and finally you will reach that you are having cancer. Then you will freak out. Then you will definitely freak out. You will think like, I'm going to die. So डॉक्टर साहब उस सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं जो हम और आप करते हैं. गूगल करने बैठ जाएंगे कि ये क्या हुआ है मुझे. अगर कहीं प्राइवेट पार्ट में हो तो और प्रॉब्लम है, क्या हुआ है. और धीरे धीरे गूगल बोलेगा भाई तुझे कैंसर, ये कैंसर के भी सिम्टम, और फिर तुम डर जाते हो, शिट मुझे कैंसर हो गया. एंड देन यू गो टू द एक्चुअल डॉक्टर, ही सेज कुछ नहीं हुआ, चूती है, बहुत छोटी बात है, घर जा. बहुत छोटी बात है. हाँ सोचना भी नहीं इस बारे हाँ में. हाँ 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 हाँ. प्लीज टेल मी, गूगल वीर आते हैं आपके पास, उनको गूगल deal वीर भी करना आते हैं ना बहुत सारे. हाँ बहुत लोग आते हैं. हाँ. उनको डील करना बहुत टफ है. अच्छा. Like once a guy came and he was like मेरे चेस्ट पे ऐसे पिंपल्स हैं and और वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है. And I saw like काफी ज्यादा था, ठीक है. लेकिन he was like मेरे को स्किन कैंसर तो नहीं है, ठीक है. मैंने कहा अच्छा आपको किसी ने बोला, आपने कोई टेस्ट कराया, कोई रिपोर्ट है आपके पास? कह रहे नहीं, मैंने गूगल पे देखा ऐसा स्किन कैंसर में अक्सर हो जाता है. मैंने कहा अक्सर से मतलब उनका है कि हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें स्किन कैंसर है, ठीक है. Then I was like, मैं तो परेशान हो गया था, मैं तो बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दिया था. मुझे तो लगा था अब मैं बस कुछ दिनों के मैं शॉल ओढ़ के गाना गाता, कहीं दूर जब दिन ढल जाए. तो and he was literally like covering every time yes, ना. वो बोलता भी था कि like मैं अभी ऐसे ओपन में नहीं जा पाता हूँ. So I gave him some creams, ointment to apply and one lotion, and then he is fine, totally fine. Then I told him never to go Google. No, I mean go to Google but be logical यार. Yeah, just एक पेशेंट्स की एक और प्रॉब्लम, just have the information, not to try the things. वही बात मुझे पता है. पेशेंट्स की आपको एक प्रॉब्लम है, हम इंडियन पेशेंट्स का वो आलम है कि
अगर मेरा आपने सीटी स्कैन किया और आपके अस्पताल, जैसे मैंने आपके अस्पताल में सीटी स्कैन करवाया था, उन्होंने 19,000 रुपए चार्ज किए मुझे। सीटी स्कैन 2 थे, कोई बेरियम पिला रहे थे और बोतल में पिला रहे थे। वो कॉन्ट्रास्ट होता है। तो मुझे एक बात बताइए, 19,000 रुपए लिए बीमारी नहीं निकली। हमारे लिए तो गाँव का है, 19,000 ले लिया, कैंसर तक ना निकलो, क्या कर रहा है ये? You should be happy that there is nothing. You tell me, what people I think like that. personally feel like that. People are so stupid. Like they think I spent it like so much. इतने पैसे बीमारी नहीं निकली, हद हो गई। बीमारी नहीं निकली। एक बंदा बताओ इंडिया में जो ये ना बोले कि भाई इतने पैसे लिए बीमारी भी नहीं निकली। ऐसे like 100 of people, like मैं बोलूंगा कि 1% पीपल होंगे जो खुश होते होंगे कि चलो मेरे पैसे तो लग गए, बट कुछ नहीं मिला, अच्छी बात है, थैंक गॉड। मोस्टली पीपल लाइक इतने पैसे क्यों लिए फिर, इस सब का क्या मतलब है? पैसे लिए बीमारी निकलनी चाहिए ना, बड़ी बीमारी कोई कुछ पता भी नहीं लगा क्या है, किस वजह से था। बड़ी बीमारी, मतलब अगर मेरा सीटी स्कैन हुआ भाई तो कैंसर निकलना चाहिए, इतना बड़ा मेरी बॉडी में, अदरवाइज कोई फायदा। 19,000 रुपए क्यों ले लिए भैया? क्या फायदा 19,000 खर्च करने का अगर कैंसर भी ना निकले तो? आई वाज थिंकिंग फिलोसॉफिकली कि ह्यूमंस ऐसे हैं, ह्यूमन जो है, जो एक ह्यूमन माइंड है, वो चाहता है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट को बिल्कुल ऐसी आंखों से देखे, फटता कैसे, पर मैं मरूं ना, मैं मरूं नहीं, बाकी कुछ भी राइट। हमारी साइकोलॉजी वाली की सुनामी आ जाए बेटा पर मैं बच जाऊं, पर सुनामी देखना नजदीक से चाहता हूं। ऐसा क्यों है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द साइकोलॉजी, लाइक डिस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी क्यों है ह्यूमंस की? फॉर दैट मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी, आई थिंक, बिकॉज़ आई आल्सो फील लाइक समटाइम लाइक there should be zombie attack in this world, and I should see that clearly, and I should. मैंने एक स्टोरी लिखी ज़ॉम्बी पे, अब बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी। ये है कि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, ट्रू, Yeah. he could not kill a living thing. That's What about the I zombies? heard. He They can are kill not dead. zombies, right? Yeah. है ना, because they already dead. Yeah. महात्मा गांधी बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे कि मारूं नहीं मारूं, चल तो रहा है पर जिंदा नहीं है। Okay, all right. So college finished, then you came to Noida. You became a teacher for a few days. Then you joined Kailash Hospital. Now, how's life in the hospital? It's like I don't say that doctors' life are not so good in actually, because they have to deal every day with different minds. No, it's not like patient. They have to deal different. If just the patient, then it is fine. They have to deal different minds. Like if there is a one patient, there are 10 minds around them, like their relatives. अरे बाप रे, yes, now I get it. Yeah. Go ahead. So it is like they have to deal with all the minds, na? Like another person is asking the question and you have already answered them. Then another person will come and he won't ask to them that what did doctor say. They will say, I'll talk to doctor. अच्छा, एक और भी बात मैं सुन, जो लोकल्स हैं यहाँ के, चाहे वो जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, अगर उनमें से कोई अस्पताल में भर्ती हो गया तो उनके जो रिश्तेदार हैं वो मतलब अस्पताल में नरक मचा देते हैं। Is that true? This is fucking true. हाँ? Yeah. And you are a Yadav yourself, but you don't want that to happen. कि क्या बदतमीजी, क्यों आते हैं उतने लोग? Exactly. Sometimes I feel like that. I think I should talk to them personally first, and I do that. Sometimes when the patient they get arrogant, I tell them that who am I? I have to tell them. So I tell them that it is not like that. हाँ, हल्के में ले ले भाई, शरीफ चेहरे से हूँ। बातों से शरीफ, चेहरे से शरीफ, बट आता मैं भी वहीं से हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो जड़ से जानता हूँ। हाँ। एक बार मैंने सुना था, पवन, योर ब्रदर पवन, उन्होंने मुझे बताया कि शायद योर मॉम और उनकी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, तो कैलाश में गए थे, कह रहे भाई बैठ के चल रहा है ड्रामा कि मतलब हुआ कि भाई तबीयत किसकी, जिनकी तबीयत खराब हुई खुशी खुशी बातें कर रहे, पता हॉस्पिटलाइज क्यों हुआ फिर? ही वाज टेलिंग मी कि बकचोदी चल रही सबके बीच, और बताओ क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि अस्पताल नहीं है, रिश्तेदारों का मिलन सेंटर हो रखा है, वो सब लोग आके बैठ के बकवास, तू क्या खाएगा बता, तू क्या करेगा बता। By that time, me and Pawan like. So your mom was hospitalized. Achha, so we talked only that this is should not happen, because then I went and I talked to the staff. There are a lot of people inside. You should change them out. Because if I am going to say that, they won't listen to me. So you went to tell the staff कि अब मेरे ही घर के लोगों को बाहर करना, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मैं बोलूँगा जाके तो बोलेंगे चला। वो था ना कि तुलसीदास ने लिखा था कि एक बार क्या हुआ, तुलसीदास जी बहुत फेमस राइटर हो गए, सो ही वेंट टू हिज होम टाउन।
होम टाउन है, सोचा कि भाई तमाम गोस्वामी तुलसीदास सब आएंगे, इन गोस्वामी तुलसीदास, बट गांव वाले तो गांव वाले, उनके अपने गांव वाले जिन्होंने बचपन देखा है, तो खाना वाना खा के बोले तुलसी जरा वो भांडा मांज दे जरा हमारा जो पड़ा, एंड इज लाइक मैं तुलसीदास हूँ यार, मेरे को बर्तन मांजने बोल रहे हैं ये लोग. सो ही रोट अ चौपाई, ठीक है, तो उसको तुलसियो बोल रहे थे वो लोग, तुलसियो करियो जरा, तो क्योंकि ही का था, वेस्टर्न यूपी का ही था वो तुलसीदास. सो ही सेड कि तुलसी कबहू न जाइए अपने बाप के गांव, दास गयो तुलसी गयो रहो तुलसियो नाम. तो ये वाला आप डॉक्टर एमबीबीएस बन जाओ, घर के लोग बोले तू बाहर वेट कर, बात बाद में आकर चल बाहर जा. ओके, सो एक और भ्रांति है या सच है, आई हैव नो आइडिया. सो देयर इज अ रूमर दैट इफ यू आर अ डॉक्टर एंड इफ यू आर अ हैंडसम डॉक्टर यू गेट लॉट ऑफ नर्सेस. कितना सच है ये? और फीमेल डॉक्टर्स जो भी हो, आई डोंट. I would say that it's like everywhere, but I would say if like nurses, they just think that they should grab the doctor, na? It's a like opportunity to them अच्छा, to date a doctor or to be with a because doctor. they'll get some concessions. Some concessions, and they will, it's like nobody leaves an opportunity, and it is good for them as for work, as for their financial issues, everything. So it's like they are always शादी भी कर लो, वो भी है, Yeah. एक ऑप्शन. obviously. I have seen many cases like this, like डॉक्टर्स getting married to nurses. Yeah, अच्छा, just because of their affairs they had. अच्छा मुझे एक और बात बताइए, जो ये डॉक्टर्स का अभी तो शायद वो कल्चर धीरे धीरे खत्म हो गया है, पर एक टाइम ऐसा था 15 साल पहले, 10 साल पहले, डॉक्टर हो तो डॉक्टर ही बीवी चाहिए मुझे, ये क्या था? Still it is. अभी भी ऐसा ही है? अच्छा, मुझे Because like if you have somebody from your same profession, na, actually they will understand. They knows things, na. So you don't have to explain to them. You don't have to tell them that what are you doing, where are you, or something like that. If they are on in the same field, so it's easy in life. प्रधानमंत्री ढूंढ के शादी करनी चाहिए, because she will understand him more. प्रधानमंत्री तो नहीं सकते. अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि I went to, I'll not give you the name, I know her name but I'll not give you the name. न्यूरो की कोई डॉक्टर है, बहुत फेमस है, नाम अस्पताल का बता देता हूँ, फोर्टिस की, ठीक है, बड़ी खूबसूरत है, मतलब निहायत ही हॉट डॉक्टर, और उनके जो पति देव हैं वो मतलब गंजे हैं. आई हैव नथिंग टू डू, नथिंग अगेंस्ट विद एनीबॉडी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. बड़े ही मतलब अजीब से लुकिंग, विद बिग स्टमक एंड डार्क कलर, ठीक है. तो वो जो मैडम है, जब मैं उनके पास गया था, मुझे कुछ इश्यूज थे, तो जो उन्होंने मेरी आंखों में एक लाइट डाल के देख रही थी कुछ, तो शी वॉज दिस क्लोज टू मी, मतलब आई कुड फील हर ब्रेथ ऑन माई फेस, एंड आई वॉज लाइक ये मैडम जो है ये मतलब ये कहीं फायदा तो नहीं उठा रही है, क्योंकि बिकॉज दैट वॉज नॉट राइट. आई कुड फील कि मुझे पहली बार ऐसा लड़कियों को कैसा अजीब लगता होगा जब कोई उनको वॉयलेट करने की कोशिश करता होगा, बिकॉज हर फेस वॉज हियर एंड आई वाज लाइक क्या है ये, इतने क्लोज क्यों आ रही हैं. और एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको. एक महिला है जो डेंटिस्ट है, ठीक है. महिलाएं आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर बूब्स, ब्रेस्ट्स, वेरी कॉन्शियस, उनको पता है उनके ब्रेस्ट कहाँ पे हैं, कैसे हैं, बचपन से बड़ी कॉन्शियस होती है वो. सो इफ अ डॉक्टर इज, आपका अगर टूथ में कुछ कर रही है एंड हर ब्रेस्ट्स आर टचिंग योर चीक्स, please explain that to me. Is that possible? The lady, would she not know that what is happening? Yeah, like, I think she knows where her. And this he also went to her, but she didn't do that shit to him. He went to her, even if she's costly, he's like, चलो हम भी try करेंगे. She's like, अच्छा मैं बता देती हूँ कैसे होता है. Then yeah, I can say that maybe she wants something else. And these people, both these people, दोनों महिला डॉक्टर, with all due respect, and I love them and respect them, दोनों को पता है मैं शादीशुदा हूँ. No, but sometimes when you are indulged in your work, you don't know where are you, what are you doing. ये हुई ना बात, ये वो one doctor defending another, क्या बात है. I must defend. आपको ये भी कहना है कि तुम्हारा दिमाग खराब है. डॉक्टर्स बहुत बिल्कुल अच्छे हैं. नहीं, लाइक अगर कुछ अच्छी चीज है तो लाइक योर ब्रेन इज गोइंग टू थिंक अबाउट इट ना. That's true. And it will go to that place. That's true.
पर मैंने ये भी सुना है डॉक्टर साहब दैट कि आप ना जो आपके जो फ्रेंड्स हैं यू नो कैसे कहते हैं ना यारों के यार यू नो बट यू आर वेरी चूजी इन मेकिंग फ्रेंड्स. It's like I don't make many friends. Like if I have spent like too much time with them, then I can only say that like yeah, he's my friend or they are my friend. If I've just spent it some hours or some days only, then I don't. It's like it is hard, no, like because if you are open to somebody, then you are totally open. I'm not like that. If I am like friend with someone, then I have some boundaries that I'll just talk about this only or that only. If I am friend with someone, then I'll talk about everything. And I expect the same from this another side also. So that's why I just like little conscious about that I don't choose make friends. एम्स की एक डॉक्टर साहब की पत्नी ने एम्स डॉक्टर्स वाइफ कमिट सुसाइड ब्लेम्स हस्बैंड ऑफ बीइंग गे. I have nothing against gay और LGBTQ community. मेरा सिर्फ इतना कहना है अगर आप गे हैं शादी क्यों कर रहे हो? That is exactly. इसने सुसाइड किया. इसने 235 डॉक्टरों के नाम लिखे जो एम्स और आसपास के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हैं जो सबके सब गे. 235 डॉक्टर्स और जिन सबकी शादियां हो रही है सबके बच्चे. So let me ask you directly. That is. Do you have nuclear weapons? No. I'm asking I you. don't care, you know. Yeah, maybe I don't know about this, but it can be true, like what she wrote and she did suicide, or it can be like some planning or something. इंडिया में ये क्यों चलन है भाई? अगर आप गे हो तो बोल दो ना मैं गे हूँ. शादी भी करनी है, बीवी भी चाहिए. I think it's because of this now, because this society thing now. People think that they are so reputed, they have so much of respect in the society. So just to keep that, they hide things. But I think this is very, you know. आप इतने सारे लोग स्टाफ में काम करते हैं, कोई ना कोई जरूर उसको देख के आपको बना दो भाई ये जो है ये बात कम लग रहा है मुझे. पर वो बंदा ऐसे एक्ट करेगा कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो है ही नहीं. तो आपको लगता है कि जब मुझे पता है दुनिया पर इसको भी नहीं पता. तो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है ना लोगों में. They don't want to accept it. देख के वो मतलब तू है तेरे को पता नहीं है बस तू है. एक दिन शीशा देख के बोलेगा मुझे लग रहा है कि जो ये बोल रहे हैं. डॉक्टर साहब दिखाते हैं कि ऑपरेशन कैसे करें सरकारी डॉक्टर. That's not only सरकारी. प्राइवेट में भी होता है ऐसे लड़ाई झगड़े ऑपरेशन थिएटर के अंदर. वो पर्सनल इशू हो सकते हैं किसी के भी, लाइक वो भी इंसान है जो ऑपरेट कर रहे हैं आसपास के. मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट अस्पतालों में फिर भी डॉक्टर्स को उतना प्रेशर नहीं है. मैं राइट और रॉन्ग सही? Private, see, pressure is like similar, Actually. but the burden you get in government hospital is like too much. Like You have also worked in the government yeah, hospitals. I worked in RML hospital. Ramanu और लोहिया. So Ramanu and Lohiya is a very reputed hospital. So डॉक्टर साहब इस बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं. डॉक्टर साहब को प्लीज अंडरस्टैंड की जैसे उन्हें था कि हम कहते हैं कि बहुत पहुंचे हुए बाबा है. तो हमारे डॉक्टर बाबू बहुत पहुंचे. प्लीज प्लीज द वीडियो हाउ ही रिएक्ट्स टू दैट. मतलब है आगे ऐसे ही तो ऐसे की बात लेकर और बात लेना और बता रहा हूं किसी गलत नहीं हो लड़का तो संसाने वाला बर्गर सब अरे और साला देखो ना लड़के के मेरे पड़ जाएंगे हमारे साथ रहेंगे तो अभी से बात करो और थोड़ा सा तुम पे ना जानते हो ना मैं कह रहा हूं मैं अपने रिलेशनशिप की बात करूं तो बीच में क्यों बोल रहा है. कितना ट्रैजिक है. This is like really sad. Like if people are like working, they should keep their personal issues outside. Like I will say, like if I'm going to the hospital, I should keep my mental issues outside that gate. If I'm entering the hospital, I should be the another person. Like I should be concerned about the work. Professional for those 10 hours or 9 hours. Yeah, like whatever that hospital time, it is like should be professional. I should be dedicated about it. पर मैं आपसे मिला हूँ डॉक्टर साहब and you have been professional. Like you don't even laugh the way you're laughing here in the hospital. Because that is not the place to do such things. Because like when you are dealing with the lives, so it's not like it's not totally funny. It is like so serious. So we have to handle everything. True. accordingly. So I think this is like some personal issues they have took it. पर ऐसा हो जाता है. And ये होता somebody है. have paid it.
and अच्छा. I can say that like somebody have paid the price of that, ना, that family. मुझे ऐसे भी लग रहा है, हाँ, somebody the kid, जो औरत का जो बेबी वो मर जा रहा है because ये लड़ने लग Yeah, जाते हैं. so just because of some personal issues, somebody has lost his life now. But I think these people are also punished because the court has taken the They must cognizance of punish, the na. matter. They हाँ. must have, it's not like, see, it's not about professional or something. हम्म. If somebody is committing a crime, they should be punished by court, or they should be punished by public, or they should be punished only. Because if it's not like that, even if somebody, big people, I would say, like if a PM is committing crime, it is a crime. Crime is crime. We should not see the level, or we should not see the profession. They should be equal. They should be, punished on equal levels. अब एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग जहाँ पे जिस सिचुएशन में, जैसे मैं बताता हूँ आपको, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर एंड आई डोंट थिंक डॉक्टर्स आर भगवान, मेरे नज़र में बिल्कुल नहीं है. लेकिन जो कोविड वाला टाइम था उस दौरान मुझे लगा कि यार ये भगवान हो ना हो, पर ये बहुत ऊपर है, ह्यूमैनिटी से बहुत ऊपर है. I don't say that like humans cannot be God. That is true. That is true. And it is our work. And if we are doing work, like we are saving, like we get blessings, we feel so happy. Like if I save somebody's life, and if I treat them, they get well. And if they give blessings, I feel more happy. I feel like so happy. Even I don't feel that happy when I get the money also. Because that is humanity. That is what you want. You want the love when you do something. So I feel that people should not run after money. They should not do these cruel things. No, it is like so bad. So तो कोविड के दौरान आप राम मनोहर लोहिया में थे. yeah, प्लीज डिस्क्राइब दोस डेज ऑफ योर, बिकॉज़ सबसे ज्यादा खतरनाक दिन तो वही थे Like, आपके जीवन के. it was so horrible. Like I was there, and I used to work in emergency by that time because other departments everything was closed. Later on, I had shifted to gastroenterology, but I used to work in emergency because everybody, all the doctors, they forgot what they are. Like they are some specialist or something. They were just doing the thing only that was COVID. Everybody was focused about it. कोविड. Because by that time, nothing was more important than that. So I used to be in emergencies, and I used to be late night in this duties. Once I remember, in the winters, I think it was December, so it was so cold, and I was on duty. So we had to wear that PPE kit, covered from head to toe. So we used to sweat inside in that cold, and if you take it out, you will be so cold, like you will get sick. Yes. So I was sitting on my duty, and like in hospitals we have limited beds only. Like so, the hospital was full, totally full. There was no single bed left. So I used to beg people, and I used to join hands to them that there are COVID centers. Just take your patient there, and do not take out them outside the ambulance, because people think that once they reach to the government hospital, they can't go back. They won't send you back. There is rule that you should not send them back. But if we don't have the bed, if we don't have any place to put your patient, okay, there is no space available. If you are going to take out your patient outside the ambulance, obviously he is going to die, because we don't have machines, we don't have oxygen supply, we don't have ventilator. Where I'm going to keep your patient. Okay, I'm going to play my part. I can do what I know only, na? But the machines, they also have their personal part. Na? They have important part to save the lives, like ventilator. I guess everybody knows about ventilator. Yes. COVID. Yes. It is like so famous. So we didn't have all that, na? So I used to really beg them, and I used to say that just go to somewhere like where the beds are available, where the oxygen is available. But do not think that if you are going to bring your patient here, that it is okay. It is not okay anywhere. And do not take out your patient from ambulance, because once you took out your patient from ambulance, the ambulance will go back. You won't take your patient back. And then the guardians, they have to pay the price, because there is no beds available. So it was so horrible. Like I used to see just bodies. Like we used to pack the bodies and. How many people died right in front of you? I haven't counted, but I would say that like more than 200 people I've seen that. And I had, like, because whenever I used to come for the work, and whenever I used to leave for the leave, when I used to come for the work, and when I used to go for my place back, I just used to see that cart who used to take bodies. So it was like every time there are dead bodies there.
And in government hospital, you know, even sometimes we don't even know who's the guardian, who's the patient. So many patients are coming. Some are dead. Some are like on the verge of getting died. There was like lot of people we saved, but we really felt so helpless by that time. Like, we didn't have the infrastructure properly. Like we were not prepared actually. That was the thing. Like there was no proper. Did you cry like one day? You know, you're alone. People are dying, and you're very sad and you're helpless. Did tears come out of your eyes? You know, I didn't cry by that time. I cried after many days when all that happened. It was settled. So yeah, I cried. But you know, I by those hours, like when I used to see dead bodies, I didn't cry because I always my mind was busy in thinking that there's next patient coming up. It was like so busy those days. I can never forget that. Maybe people have forgotten. Maybe people forgot. Humans have this tendency of forgetting things They easily. forget easily. They just move on so easily. But I can never move. I am so scared of thinking of those times. बट एक बात है, चाहे मैं मानूं चाहे ना मानूं, बट यार डॉक्टर होना इज अ बिग डील यार. It's not a small thing. Like if I'm a doctor and somebody dies, it's on me. I mean, even if people don't blame me, I'll still think that. That is the thing. Now that like, see, it's like you can just try your best, okay. But if you are going to feel the guilt, like the people have died because of you. See, they were already dying. Okay, you tried your best. You tried to save them. If they got saved because of you, then it is fine. Because sometimes people they just think like God saved only. Doctor they were just putting in the machines only. They were just playing around only. It because of God they were saved only. ऐसा था भी, like ऐसा था भी कि जैसे आप लोगों को इलाज तो पता नहीं था कि इलाज क्या है. तो आपके मन में कभी आया कि यार जो ठीक हो रहे हैं भगवान की दया है इन पे, क्योंकि हम तो केवल वो कर रहे हैं जो बेसिक है. I would never say that there is no God. There is God. Obviously, there is God. So I was saying like, yeah, sometimes it was like some miracles. Like I have seen people, they were like almost going to die. No facilities were there. But somehow, either their body repair, like body Automatically, automatically improves, because this is like immune system. So it also works. So maybe they were immune to the disease, but they really affected so badly. Like their lungs were gone, everything was gone. Then again they got fungal infection also. After COVID, so many people. Exactly. It's not like fungal. So they have survived all that. So sometimes I feel like it was a miracle. Like it was just the God gift for them. Like they are having another life. Otherwise they could have just died. The critical conditions. But so you are not one of those people who bend down during the bad situation. वो इकट्ठे impact आता है when you decide to cry कि मेरा अब ठीक हो गया सब खत्म अब मुझे रोने का time आ गया. It's a great thing यार. It's like when you are working, you cannot be emotional. Actually, I think you have seen the movie as well, yes. Like so that professor, he's like totally correct. अच्छा. Like, if you are with the patient, you cannot be emotional. Like, if you would be emotional, you cannot treat them. That's true. This is true. Because if you are going to think to the angle like he's going to have pain. कोई babies है, छोटे बच्चे ऐसे कुछ हुआ कि छोटे बच्चे की death हो गई हो आपके आसपास? No. Thank God. I don't want to go to that phase. That it will be like so bad for me. नहीं, but एक example अगर ऐसा है आपके पास, तो कभी ऐसा हुआ कि babies भी आए, जैसे babies मतलब toddlers जो होते हैं. Like when I was in college during the internship time, so I had this thing like there was one lady, she was going to deliver a baby and I was on duty and I was in gynae department because we all had to do duties in every department during the internship. So I was on duty, so I called my this senior, she was on call. So I called that, ma'am, there is a patient and she is having, I think she is going to deliver a baby, so you should come fast. And then she came and like yeah, we delivered the baby, everything was fine. But because of the guardians, they don't want to spend money. They were like, we don't have money, we don't want to donate blood and all, we don't want to keep our child for the observation. Like after delivering the baby, we have to keep them in observation to make ensure things that everything was fine. So they were like not ready to stay. They were like just leave us because they were like just scared that we will charge them. And in colleges, nobody charges too much. Just the basics only.
So they were not ready to pay the basics only. उनको ये लग रहा था कि रोकेंगे तो पैसा लेंगे, हाँ, इससे एक अजीब से बहुत पैसा हाँ लेंगे, एक धारणा बन गई कि हाँ, अस्पताल में जानबूझ कर रोका जाता कि पैसा ले सके. तो they were like, हम लोग को explain भी किया कि like this is just for the baby, like we have to ensure that the baby is fit enough to go or the mother is fit enough to go. But they were like, no, everything is fine, we will look after it only. And then like against the medical college, against the doctors, they took the baby. And like I think they didn't reach so far. They came back in the middle of the night. I think it was 2 around the clock. They came back and the baby was dead. He was totally white. And we sent the baby. By that time he was pink. But after some time, I think around 12 we sent them, and around 2 or 3 He died. and the baby was totally white. It was like pale white. So he was already dead. There was no place. We tried, but it was like you just tried. Maybe he'll survive. Maybe something will happen. But there was nothing. So I told them that this is not on us. This is your fault. And the family was like, no, we told you only. ये भी है. अच्छा ये भी बहुत है. I want to take decision on my patient. मैं घर वाला हूँ इसका, मैं बताऊंगा. और जैसे ही कुछ हो गया तुमने किया ये क्या सीन है? I think it's like some people who don't know shit. But those kind of people they do. But most of the people, आपको नहीं दिखते झगड़े हो रहे हैं? अधिकतर अगर पेशेंट मर गया अस्पताल में तो परिवार वालों को लगता है इन्होंने ही मारा है. अभी एक्चुअली में एक इंसिडेंट हुआ यही मेरे साथ में यहाँ पे क्या लास्ट में. अच्छा हाँ ये इंसिडेंट हुआ लाइक एक पर्सन था, he met an accident. Okay, he had accident around like in the middle of the night around 2 o'clock. और वो ऐसे रोड पे ही रहा कुछ टाइम तक, आई थिंक हाफ एन आवर 1 आवर. अरे बाप रे. पुलिस ने देखा रात को पुलिस ने देखा कि बॉडी पड़ी हुई है, वो हॉस्पिटल लेके आए. तो अननोन थे. ठीक है, आई आल्सो डिडंट नो दैट somebody is from my relation or they know me or something. So I saw the patient. It was too critical. Like I think hardly he was having like 20 to 30 beats only. अरे बाप रे. Yeah. So and the saturation was around I think 40%. So he lost so much of blood on the road also, and we don't know how exactly for how long he was on the road. So when he came, we put him in the ventilator in ICU, and we tried to manage the things. But then relatives, police called the relatives, and they came in sometime, and they were like, we don't want to keep him here because it's so expensive or like this, some issues like that. So they were talking like it's an issue and all like that. So by that time, they said that we want to take our patient to another hospital or somewhere else. We won't keep it here. So we tried to explain them that this is really, really critical situation. Like if you take out the patient from the ventilator and you will shift it, the patient will collapse, he will die only. But they were not ready to listen this. So many people came and they were like fighting and like. So I felt really bad like that. We are trying to save your patient. And they thought you guys trying to make money. Yeah. They were thinking like we are trying to make money. So in those tough times, what will you do? So we have to run through the papers. We make that you have to write Discharge on your own responsibility. Because tomorrow you can say that this hospital has killed my this patient, and they have killed our guardian or something like that. So we run through all the formalities and we say that if you want to make it, ensure that you take it with the ambulance, which have the Ventilator facility. Yes. So that at least you will be managed. But they didn't listen at all. They didn't listen at all. They don't want to go to the ambulance of hospital also. They have this, I don't know what I'm going to do with the money if the patient is not going to be alive only. So at least give it a try. Money comes second, the lives come first. This is the motive of every hospital. No hospital is going to say to you that just pay the money only, pay the money only. So, but human psyche एक अजीब सी psyche है. मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मेरे साथ क्या हुआ है. जितनी बार मेरी गाड़ी में कोई टकराया है या मेरी गाड़ी किसी से टच हुई है या कोई मेरी गाड़ी में खुद ही मार देता है, तो मैंने हमेशा ये पूछा आप ठीक तो हैं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग देख तूने क्या कर दिया मेरी गाड़ी के साथ में. So they forcefully they fight like anything with the staff, and they forcefully took the patient. And meanwhile they didn't took the ambulance also, which had the ventilator. And
while they were shifting to another hospital, on the way only he died. And I came to know about this later. Like one of my relative, he had some relation with that, and then they called me like, "Are you in hospital?" I was like, "I just left the hospital some time back." They're like, "Yeah, our some relative is there," and they were like, this. I was like, "Oh, that was your relative." Then I was like, "You should have told me about this earlier. Then I could have talked to you. I can make you understand. Like this is like this. At least if nobody is going to listen, at least you will listen to me, na? Because you trust on me actually. Because I can make you understand how critical the situation was about the patient." And they were like, "Now so we can't do anything." I was like, "Yeah, now we can't do anything, but But we could have done at it. We least could have saved. we were saving already." And I guess there was like 60% chances that it would have been saved if they don't take such kind Yeah, I of think decisions. हम सभी को इस सोच पे ज़रूर काम करना चाहिए। जो हमारी एक सोच है ना कि देखो, मैं ये भी मना नहीं करूँगा, अस्पतालों ने अपनी इमेज खराब भी करी है, लेकिन जो अभी जो चेंजेस हो रहे हैं, मेडिकल इंडस्ट्री हवा में नहीं चल रही है। अगर कैलाश हॉस्पिटल है तो वो जिम्मेदार अस्पताल है, याद रखिएगा। पैसे भी लेंगे वो, पर वो आपकी जान जरूर बचाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारियां उनको सरकार की जवाब देना पड़ता है, कोर्ट्स को जवाब देना पड़ता है। तो प्लीज कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि हर डॉक्टर लूटने के लिए बैठा है, हर अस्पताल लूटने के लिए बैठा है। And it's not like that if somebody is running some hospital or an institute or any company, so it's running on money only. Nothing runs on. for free. So अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ everything कि I made little bit of money. Some people came to me and said, hospital खोल दो। नाम like, मानव मैं स्कूल खोल लूंगा, वहां पे मानव संरचना होती, मानव को बचाना नहीं है, स्कूल खोल लूंगा, हॉस्पिटल नहीं खोल सकता। But I guess schools are also similar to hospitals. Like everything starts from school. Even a doctor, he is going to come from a school only. So that is the basic thing. So that is much better. But we need hospitals too. बट मेरे साथ एक और भी चीज है जो ह्यूमन साइकी है, जिसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, 9/11 हुआ था। अब क्या वो प्लेन है, कोई मारने वाला है, और जब उसने कॉकपिट पे कब्जा किया, मैं उठा और मैंने उसको हरा दिया और प्लेन को लैंड करवा दिया। अब मैं हीरो हूँ, ट्रू। लेकिन वो जो लॉ मेकर, पार्लियामेंटेरियन जो अमेरिकन है या इंडियन है, वो एक लॉ लेके आता है जिसके तहत हर प्लेन में चढ़ने वाले व्यक्ति की बैकग्राउंड चेक हो जाएगा। आप समझ रहे, बैकग्राउंड में कहीं काम कर रहा है, किसी को पता भी नहीं वो क्या कर रहा है ना। पर आपको नहीं लगता उसने तो लाखों करोड़ों जानें बचाई हैं जो कि जा सकती थी, उसकी बात कोई नहीं करता। तो स्कूल और अस्पताल का अंतर यही है। हाँ। अस्पताल में जो डॉक्टर जान बचाता है वो वहीं पे बचा देता है, बिकम्स अ हीरो। स्कूल का काम है ऐसे रिश्तेदार तैयार करें जो लड़के अपने पेशेंट में कल्पना दे जाए। वही अब वही तो मैं बोला, like I was also on this point. School is the basic एजुकेशन सबके स्कूल से ही होती है। वहीं से डॉक्टर, इंजीनियर, वहीं से बिजनेसमैन, वहीं से हर कोई निकलता है स्कूल से। स्कूल सबसे इम्पोर्टेंट है। बट आफ्टर स्कूल सबको हॉस्पिटल, जॉब, सबको कंपनी वगैरह सब चीजें चाहिए होती है ना। सो स्कूल इज गुड। एक और चीज पूछूंगा मैं आपसे, जो ये जैसे आप हैं या जितने बच्चे जो एमबीबीएस करते हैं या आईआईटीएंस हैं, वो इतनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं कि उनका एक तरफ तो बड़ा अच्छा विकास होता है, जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर, दे बिकम गुड इंजीनियर और ग्रेट डॉक्टर्स, ग्रेट इंजीनियर्स। बट जो बेसिक दुनिया जो है उससे कट ऑफ हो जाता है। यू आर नॉट वन ऑफ दोस पीपल बिकॉज यू आर डिफरेंट। बट मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की बात बता रहा हूँ, बिकॉज आई गेस this is like some mental pressure. Like if you go through this much of syllabus, this much of books, and this much of things, no, then obviously you will have no time to interact with other people. You will have no time to think about what is going around you, what is going in this world. Like in so much, you have to go through so much. Like you have to study a lot. Like in my MBBS, I remember like we had to study 19 subjects, and all books they were like like 400 pages, 500 pages. So that is like समझना ही नहीं है, सोचना भी है कि भाई ये यहाँ से यहाँ you just don't have to turn the page and read it. Yeah. You just have to understand that. Understand. So that is like too much. और फिर आप लोगों का, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, कि
You said we are not doctors, we are practitioners. Sir, We that are is for practicing. life. That is for life. We are practicing. We are only. reading, then we are Because- practicing. I think in every field, everybody is a practitioner because nobody have reached to the peak. Na? We don't know everything. We are learning only. Day by day, there are new diseases. Day by day, there are new medicines. So we are researching every day and we are practicing things. If I am looking at a patient, every day I am seeing some new thing in them. Na? We are treating something new. So it's like that is it's a practice only. That you learn every day, you grow, you learn, and then you तो grow. मुझे वो भी सरप्राइजिंग लगता है जब प्रैक्टिकल एंगल जो दुनिया का एंगल है वो डेवलप नहीं होता। मेरे ऑफिस में मैंने एक इंजीनियर हायर किया था और मानिए कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो जेब में 10-20 रुपए लेके निकलता था, अपना पर्स भी नहीं लाता था। वो बंदा ऐसा था जो उसका बाप उसके सारे निर्णय लेता था। मैं उसका नाम नहीं बता सकता बट आई नो हिम। उसका बाप उसके मतलब वो 2 बच्चियों का बाप था, उसके बाद भी उसका बाप उसको पर्स में कितना पैसा जाना है, जैसे हमने उसको एक दिन बोला आधार कार्ड लेके आओ तो ले आया होगा वो, तो उस दिन एचआर ने मांगा नहीं उससे आधार कार्ड। अगले दिन फिर अरे वो आधार कार्ड नहीं बोलते, कहता मैं कल लाया था, आपने कल मंगाया था, मैं पर्स निकला था, पापा बोलते हैं पर्स लेके मत चला करो। फिर सिर्फ 20 रुपए देते हैं पापा, बोलते हो जाओ। ऐसे लोग ऐसे हैं जिनकी सुहाग रात में भी उनका बाप बाहर बैठ के उनको इंस्ट्रक्शंस देता अब ये करो, अब ये करो। मतलब ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए। एंड ही वाज वी वर पेइंग हिम गुड मनी, कम से कम 12 लाख का पैकेज रहा होगा। That is like spoon feeding thing, no? हाँ Like his dad is feeding everything and he's following that only. So I must say that people should have their own life. बट नहीं होता ना, जो पढ़ते रहते हैं। मतलब पढ़ाई से आपको क्या कहते हैं, मतलब पढ़ाई आपको चूतिया थोड़े बनाती है, पढ़ाई आपको स्मार्ट बनानी चाहिए। लेकिन चूतिए तो सब है पर किस लेवल के हैं वो अब ये वीडियो decide देखिए, नहीं ये वीडियो देखिए, ये बंदा बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब देखिए ट्रेनिंग देखना इतनी घटिया है, ये जो छोटा बच्चा वो भी अपनी माँ को मारता है। और इनका घर देख के लग रहा है इस बंदे का पैकेज बहुत अच्छा होगा। तो बच्चा मारेगा मम्मी को, एज इफ ये मम्मी को मारना इज द बेस्ट थिंग टू डू। स्टॉप इट, अभी मार रहा है। मतलब ये वाली साइकी में समझना चाहता हूँ आपसे, बिकॉज़ यू आर नॉट लाइक दैट, बट आई वांट टू नो द साइकी। No, he is sick. He is mentally sick. Totally sick. No. This kind गुस्सा आ गया ना? Yeah. मुझे भी आ रहा है I'm गुस्सा। really feeling now. Because how can somebody do this kind of thing to their own wife? Like not to anybody. They should not do it to anybody. But if an enemy, then I can understand that everybody is having anger to their enemies. But like to own wife, own kids, he is doing like. एंड देन मेरा ये सवाल है कि देखो, एक है कि मैं जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ा लिखा था, मेरे पिताजी मेरी माता को पीटे, मुझे याद है, बट मेरा बाप 10वीं फेल था। वो मैं समझ में आता है भाई, तू तो मतलब तेरा पैकेज भी है 50-60 लाख का, जिस तरह घर में तू रहता है, तो अपने बच्चे तक को ये शिक्षा दे रहा है कि माँ को पीट। दिस इज लाइक बैड पेरेंटिंग। अगर उसके बाप ने ये किया तो ये जरूरी नहीं कि तुम आगे ये लेके जाओ। और इसने कुछ सीखा नहीं है, जहां तक लग रहा है इसने कुछ इस बात से सीखा नहीं। इसने सीखा कि जो मेरे तो बाप आप ने किया ऐसे मैं भी लोगों वही को करूंगा। सलाह दो, बताओ मुझे, ऐसे लोगों को समझाओ कि आपकी तरह कैसे बने लोग, जहाँ पे एक तरफ पढ़ते जा रहे हैं लेकिन दूसरा एंगल जीरो हो गया है, और ये लोग दहेज भी बहुत लेते हैं। मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ पक्का, हाँ, ये हमारे पैकेज तरफ के का हिसाब से लेते हैं। हाँ, पैकेज ऑफ दहेज लेते हैं। बट मैं तो सोच रहा हूँ अगर जो ऐसी बीवी जो दहेज दे के ऐसे हस्बैंड के पास जाए, उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? डिवोर्स दे, पीटे दोबारा, और क्या। बट वो है ना सोसाइटी का, कि सोसाइटी में डिवोर्स वुमेन्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नो दैट इज लाइक मेंटली सिक है पीपल बहुत ज्यादा, सोसाइटी को लेके, सोच को लेके बहुत ज्यादा। इस चीज पे ना मैं कहूंगा कि लोगों को अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए। एक्चुअली दे शुड विजिट साइकियाट्रिस्ट, बट पीपल थिंक कि साइकियाट्रिस्ट तो पागल थोड़ी हूँ मैं पागल नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ। हाँ। बट एक्चुअली अगर उनको एंगर इश्यूज हैं, उनको कोई लाइफ में इश्यूज है, दे शुड जस्ट must visit psychiatrist because it really helps. If they are going to get counsel, they will know
that what is normal, what is not normal. So they should know that this is not normal after all. And I think even in 70s also people don't used to beat their wives like this for no reason actually. हाँ मतलब This कम is से like- कम जो ऐसे रह रहा होगा वो तो हाँ। हाथ नहीं उठाता होगा। वो मुझे भी- ऐसा उम्मीद है। हम लोगों जैसे आई हैव बीन सन ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड, तो होता है ना कि पोरेस्ट ऑफ द पुअर सोसाइटी से आता हूँ मैं, एक्सेप्टेबल है शायद थोड़ा बहुत, नहीं अलाउड नहीं होना चाहिए पर एक्सेप्टेबल है। अलाउड नहीं होना चाहिए, हाँ। बट एक्चुअली में फ्रस्ट्रेशन और एंगर इश्यूज, अपने फाइनेंशियल इश्यूज हो या फिर कुछ और इश्यूज हो, मेंटल इश्यूज हो ना, उसके लिए सबके घरों में चलते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग पे, एक जन्मदिन understanding- पे बताओ थप्पड़ मारता है, जन्मदिन है बच्चे का, बच्चे का बीवी को जन्मदिन पीट रहा है, और- और बहुत छोटी गलती नहीं होगी क्योंकि लग नहीं रहा कोई बुरा बहुत ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। इतना सब कुछ सोसाइटियों में चल रहा है, देन दे डोंट हैव द नॉलेज, दे डोंट थिंक फ्रॉम देयर माइंड. I don't know, maybe they have said their minds now. Okay, now because she's a wife, so let's bring you back. You're not married yet, right? No, I'm not. You are one of the Yadavs जो 25 साल का हो गया है, No, I'm जिसकी शादी नहीं हुई है। Yeah. बहुत ही रेयर प्रजाति है इनकी, क्योंकि यादवों में 20 साल 19 साल maximum 22. मैक्सिमम 22 में शादी हो जाती है। क्योंकि मैं शादियों में गया हूँ यादवों को, बोलो इसकी शादी हो रही, कह रहे हैं हमने भाई ये तो खुद ही बच्चा है, कह रहे नहीं शादी होना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे मैनेज कैसे किया आपने, पिताजी को कैसे कन्विंस करके रखा शादी मत करवाओ मेरी? Actually, पहले तो टाइम ही नहीं मिला कॉलेज में और उसमें, ठीक है, उसके बाद then I joined hospitals and still I'm studying for my PG. So I think until unless I think that I am capable of taking care of somebody like my kids, my wife, I think I should not marry. Until that, I feel like that, yeah, I can take care of them. Not dependent on your father or his money. Yeah, I should feel like that, yeah, I am capable of taking care of somebody, then I should marry. That is the thing only. So I don't feel like that now, like I am going to take care like my kids or that now. Okay, now what is the future? When are you planning to do MD or MS? Yeah, I'm planning to do MD in orthopedics. I want to be orthopedic surgeon. Achha. And how like in how many months or years you're planning to? It's like first I have to clear the NEET PG examination. Okay. And then I have to get an admission in a college. Then I have to study for 3 years. And then I have to practice like 2-3 years in some government hospital or in some colleges, in the institute actually. Then I'll get that thing, no? अच्छा, फिर you can start your own practice. Yeah. Right now you okay. I एक can और do my own surgeries, like on independent surgeries. मुझे एक और बात बताइए, जो ये जो कनाडा है, अमेरिका है, यूरोप है, वही चीज जो आप लोग 4 साल में पढ़ते हैं वो लोग 8-9 साल में क्यों पढ़ते हैं? इतने गधे होते हैं? No, it's not like that. No, we don't study that in 4 years. Like we study for 5 years in MBBS, and after that we study for like 3 years. Internship. No, 1 year is internship, 5 year MBBS, and after that 3 year MDMS, and after that नहीं, वो भी MD करते हैं भाई, उनका MBBS 7-8 साल। because they include it, like MBBS and MD is included in अच्छा. one, so that's why it's 8 years. Otherwise, if they do MBBS separately and if they do MDMS separately, then it will be like 5 years and 3 years. So it's like combined for them. अच्छा, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी, मेरे गांव में मैं सोच रहा हूँ कि एक हॉस्पिटल शुरू किया जाए, बट वो इट्स मोर ऑफ I'll spend money in that. धर्मार्थ नहीं होता जो, मतलब जैसे जो आपने कहा ना कि गांव का बच्चा आके मर ना जाएगा, so ये है सोच। So actually for that you need a good team for doctors, like who are like not into money, like they have like who are saturated, like I know people like still money is need for everybody. True, that is true, but there are people, there are lots of doctors, there are lots of people who go beyond that, like they are earning from another place and they do this things na for free or for the less prices in other places. So I know those kind of people, so you can go for that. एक और बात बताइए, एक साधारण यंग लड़का है, उसको प्लीज Yeah, and I want to include one more thing, like you don't have to think that कोई आके वहाँ पे मर ना जाए. You should think that कि
वहां पे आके ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं, जो एक हॉस्पिटल ना होने की वजह से मर रहे हैं ऑलरेडी, सो एटलीस्ट वो तो रुक जाए। जो लोग सिक होते हैं, जो छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर रहे हैं, ठीक है, बस वो इसीलिए मर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। सो एटलीस्ट अगर वहाँ पे डॉक्टर होगा और एटलीस्ट वहाँ पे हॉस्पिटल होगा तो वो लोग तो नहीं मरेंगे एटलीस्ट। देखो जो मरेगा उसको तो कोई नहीं बचा सकता, ठीक है, बट वी कैन ट्राई कि कम से कम मरें या ज्यादा से ज्यादा लोग जिए ना, वी कैन ट्राई फॉर दैट। सो यू डोंट हैव टू थिंक दैट कि कोई ना मर जाए, यू हैव टू थिंक दैट कि बच जाए। पॉजिटिवली, यस। मैं ये कह रहा था कि जो भी यंग बच्चे आपको देख रहे हैं, फॉर देम टू रिमेन हेल्दी, क्या क्या सलाह देंगे आपको, व्हाट दे शुड डू? First thing I'll say that for the young generations, I will say that they should just keep their mind healthy. Like if they are going to use their brain and if they will really think of their own good, then they should stay away from their phones. They should not think that phones are future or something like that. They should think for their How mind. many hours on phone is good enough for the eyes? Like for the eyes, I must say that you should avoid the phone. You should just use only the necessary things. Like if somebody is calling, if you have to call somebody, for like that. Social media is also like fine. Like in a day from 24 hours, you should not spend more than 3 to 4 hours. 3 to 4 hours on a phone, that is like more than enough. Okay. On a phone. And what about the physical health? What they should do? Is there any suggestions for that? So to stay fit, like you can talk to my brother, he knows that. But yeah, I must say that mental and physical health, they are relatable. If you are going to stay fit, if you are fit from your physical fitness, then you are mentally fit. That is like so much relatable, because if your body is capable of doing things, then only your mind can do those things. It's not like that you are getting so sick and you don't eat properly, then your brain will also not function properly, na? So your mind and your body, they work like together. तो जो हमारा हिंदुस्तानी खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी, जो रेगुलर सबके घर में बनता है, healthy enough? Yeah, healthy enough. Actually, like our build is like that only, like dal The chawal. Indian way. Yeah, we should, but that's not like we should not eat only roti, chapati, rice or curd and all this, na? We should eat everything, like fruits and vegetables too. So I think most of the things we get from that only. We don't have to turn to some, extra things to stay healthy. But if you want something, some physique or something other thing, then obviously you will have to go accordingly, na? What To stay fit, to fix the metabolism, कि ताकि वो perfect रहे? कोई ऐसी चीज है जो खाने पीने की उसमें है, या कोई ऐसी चीज है जो मतलब जैसे ना, कोई ऐसी मेडिसिन है जो which is over the counter, which is allowed and people should try? ऐसा कुछ एडवाइस देना so चाहेंगे? there are medicines to boost your metabolism, to keep you fit, to make you lose weight, to make you gain weight, but they are like okay only for a limited time. अच्छा. Like consumption of these kind of things over the limit, I think they are going to और जो ये नेगेटिविटी फैली हुई है समाज में कि ओ माय गॉड, पाउडर वाली बुड्ढी बना दी इसने, तो वो क्या है? मतलब वो प्रोटीन पाउडर, that is some uneducated people only who say that powder wali body banani. I think people who know what is protein powder, what is protein, they won't talk like this. So the babies, like newborn babies, they drink protein powders. They drink the milk. When mother, they don't lactate, they don't feed their baby, the doctor prescribe the powder only. Yeah. So this is protein powder, the whey protein is healthy. Yeah, it's healthy. Okay. Like if you are taking on the accurate way, it is healthy. Everything नरम is मत healthy. मचाइए. हाँ. अगर आप कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा लोगे और मतलब सही तरीके से नहीं लोगे, तो देयर इज गोइंग टू हार्म ओनली. सो यू शुड नो. फर्स्ट थिंग वही है कि एजुकेशन, अगर आपको नॉलेज है चीज की, वो चीज क्या है, देन ओनली यू नो कि कैसे कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है. बट अगर आप अंधों की तरह किसी भी चीज के पीछे लग जाओगे तो फिर तो तबीयत ही खराब होगी. एक ना जो रोगन शो है, मुझे देखा होगा, उसमें एक डॉक्टर आया था जो इंडियन डॉक्टर है पर वो यूके का है. उसने बताया कि जो स्टेंट और हार्ट में स्टेंट डलते हैं, तो कह रहा यूके में जहां जरूरत नहीं भी थी
हॉस्पिटल्स ने उनको चार्ज किया और स्टिंट डाले, जबकि कहता है मेरी थियरी मैंने लिखी थी उसके तहत जरूरत नहीं है स्टिंट की, पर फिर भी उन्होंने किया। तो जैसे कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं या कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ इसलिए जनता को चार्ज करते हैं क्योंकि वो चार्ज कर सकते हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? I would say that is really bad. Like if people are doing like this, like yeah, I won't say that all hospitals are good. वो वाला शो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ है ना आपसे, दैट शो वाज अ काइंड ऑफ बैंड, हो सकता है इन्होंने वीडियो उड़ा दी हो Maybe उसकी। they have removed the videos. Huh? But yeah, I get it. Like there are hospitals, there are doctors who do such kind of things, and I personally say that this is really bad. We should not do पर this. बहुत सारे लोग आपके जैसे डैड नहीं है, उनके पास अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, जमीनें हैं, ये है वो है। But accordingly, see, yeah, but it's not like that you won't earn money. You get your salary, you just start your own practice. Just charge what is needed, not extra. अच्छा अभी आप जैसे you have a नजर ना लगे, but you have a good home, you have a good family takes care of you. What do you do with your salary? I just spend it on myself or just roam around like that. हमें तो कोई पार्टी दी नहीं है आपने आज तक, कभी बोला नहीं चलो पार्टी कर लेते हैं। You are always invited. ये बड़ा अच्छा, you are always invited, पर मुझे कभी इनवाइट नहीं किया, ये अच्छा है। Like I don't do too much parties. Like I just go some restaurant. I have just meals only, not like so parties and all. Not like that. That's why you are alone, you don't have girls in your life. I have. अच्छा जी, ये कब हुआ बे? I have. ये बहुत अच्छा है। कुछ स्टोरीज इनकी हैं जो मुझे किसी और के थ्रू पता चली हैं, which I can't share, but क्या मतलब इनकी स्टोरीज जो होती है ना भाई साहब, डॉक्टर साहब के हमारे, वो इतनी ज्यादा मसाले वाली होती है ना कि मतलब सच्ची बता तक नहीं सकता मैं आपको। Anything else you want to share towards the end of this show? I must say that just trust your doctors. Don't think that they are going to take your money only, and don't regret that there is nothing in your reports. You should be happy about it. That is the main thing I would say. डॉक्टर से भरोसा करें, अगर आपने टेस्ट करवाया और वो महंगा है और उसमें कुछ नहीं निकला तो कृपया खुश रहें कि कुछ नहीं निकला, I'm happy. हाँ. ये ना सोचे कि हे भगवान इतना पैसा ले लिया और कैंसर भी नहीं हुआ हमको। Please don't do that. Don't do that. So thank you very much, डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पे आए, really appreciate it. And डॉक्टर साहब के बारे में, you know, he's a great human being and a friend. And please like, subscribe, and press the bell icon for our channel. I really Please do appreciate that. it. Yeah. We need your help. Yeah. Like you need our help, we also need your help. No? And Dr. Saab is going to promote our channel because he has many people. So, you know, thank you for doing what you did, sir. Thank you very much. I'm glad for this show.